Good evening to all learners. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. First of all, register your name and roll number in message box. Then we proceed to counsel or discuss about our subject matter. So we recall to our previous topic, the scientific management propounded by F.W. Taylor, as we discussed yesterday. So scientific management that focuses on the point how to increase production. So any organization, industrial organization ho, social organization ho, or mines organization ho, where there is organization that we require to maximize output and minimize costs. So that is why here one important concept I am indicating to you through my counseling parts or through my counseling process, that in any organization there have been possesses 5 PM, men, money, machinery, material and management. मन रख प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन रे 5टी एम को नेकरी गठित कौन सेटा 5 PM. So men, money, machinery, material and management. मन रहिला men, money, machinery, material and management. These are the 5 PM contributes to the organization. How? So here F.W. Taylor cordially and tremendously explains about how the organization, the 5 PM will help to maximize the output or production, and if output or production will increase, automatically the cost will diminishes. So cost will diminishes means the organization will run for the long-term purposes. Business will expand, etc. So F.W. Taylor, in this context, as overview that how efficiency of the worker will hike, worker मानकर efficiency दक्षता केमती वृद्धि पाइबो एवं काम करिवार इच्छा शक्ति, काम करिवार आग्रह केमती बढ़िबो, that depends on the scientific management. In scientific way, we should make a division of labor also. श्रम विभागीकरण विभाजन करिबा, so that efficiency will automatically increase. So these are the concept as included in F.W. Taylor scientific management. So third one hoji, that is your administrative management, principle of administrative school tak कहा जाए. So bureaucratic management गला, तापर scientific management गला, next होची our administrative management. So administrative management is also propounded by Henry Fayol. Henry Fayol during the period 1841 to 1925. 1841 ରୁ 1925 ମଧ୍ୟରେ ସେ administrative management ଉପରେ Henry Fayol propounds his version. तांकर version, तांकर analytical view गुड़िक प्रदान करिथिले for the organization. जे कोनसे organization पाई से गोटी administrative management principle propound करिथिले. So what are the main themes of his administrative management? So he is by profession one of the French mining engineer. Henry Fayol जने mining engineer थिले. So he is known as the father of modern management. तांकु title as father of modern management. So Fayol assumed that administration is a process that must be carried on at all levels of organization. Fayol identified the core elements of management as planning, organizing, directing, and controlling, coordinating, etc. Henry Fayol, the modern version of the
administrative management focuses on the point. केते गुटे पॉइंट मन रखि परिबो लर्नर्स लाइक प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग planning organizing directing coordinating and like your staffing controlling reporting, all these are the essential elements to make successful, to revive the organization, to develop the organization, so that that there are numbers of items helps to the organization to develop the management technique. So gote organization sangathan re social organization ho ba any other organization, so the items are required: planning, organizing, directing, controlling, coordinating, staffing and reporting, budgeting. So all these are the items are cordially help to develop the organization. Are you clear? Hello, are you clear? Yes, sir. Yes, sir. प्रत्येक मन रख प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन ए गुडिक एस्पेक्ट गुडिक निहाती फोकस करबा उचित। कोन ना प्लानिंग ऊपर योजना करबा दरकार, ऑर्गेनाइजिंग करबा दरकार, संगठित करबा दरकार। काहा को संगठन करबा टू 5 पीएम किए प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में जानि जंती मेन मनीष अछंती, मशीन अछंती, हैं मनीष अछि, मशीन अछि, मेन मनी अछि। टंका नथिले केमिति ऑर्गेनाइजेशन चलिबो? मेन मनी, मशीनरी, मटेरियल अछि, विभिन्न प्रकार मटेरियल अछि, एसेट, फर्नीचर इत्यादि। सो लास्ट होछि मैनेजमेंट। सो कंप्लीटेड 5 पीएम। सो this 5 pm analysis is a vast discussion. We should not ignore and only focuses on the important points. So that's why this is the administrative principle management as propounded by the Henry Fayol. So after having identified the basic elements, Fayol also given some sort of principles also. केते गुडे नीति मध्य निर्धारण करिथिले for the administrative successful to take successful stage to the administrative management, like one, division of labor, authority, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, and remuneration, centralization or decentralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure, initiatives, etc. So these are the some of the important principles of Henry Fayol administrative management. ये होची केते गुडी का नीति नियम हां प्रत्येक प्रशासनिक बा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पई निहाती। So apart from this, so let us listen. Human relation, मानविक जो संपर्क and integrative approach. Human relation plays one of the important role in organization, any organization, either it is voluntary organization or other social organization. So first होची human relation approach रे एल्टन माओ जने that propounded the human relation approach. Elton Mao takana बुझियला। So that Hawthorne studies US रो गोटे जगह अछि, प्लेस अछि Hawthorne studies से Hawthorne रे स्टडी करिथिले एंड रिसर्च करिथिले, गवेषणा करिथिले कोन ह्यूमन रिलेशन माध्यम रे, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच माध्यम रे हमें हाउ वी
develop the organization. So we require the people skill, make a tight relationship among the people so that the organization will grow and develop. आमे किभली मनुष्य मनुष्य भितर आमे संपर्क स्थापन करिबा. So there may be a drunkard, there may be chain smoker or illiterate category. Some people having family problems, some people having financial problems, because we are social being. जेहेतु आमे समाज रे बसवास करूचंती, आम समाज रे बसवास करले हमर अनेक समस्या थाए. कार स्वास्थ्य समस्या, कार आर्थिक समस्या, कार गमनागमन असुविधा अच्छी, कार अन्यान्य प्रोब्लेम अच्छी. किए अनेक समाज रे अछंती, अनेक ड्रंकार्ड अछंती, अनेक चेन स्मोकर अछंती, अनेक लोक अछंती जो माने कि अशिक्षित शिक्षित नुहंती, अनेक लोक अछंती मध्य बहु शिक्षित. सो ये भली लोकों को नेकी गोटा समाज चली. So social behavior. So in an organization also some such type of people are present. So Elton Mao Hawthorne कौन कले during 1880 to 1949, and his associate conducted extended research at the Hawthorne plant of the Western Electricity Company. से रिसर्च करिथिले वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ऑफ चिकागो यूएसए. चिकागो सहर यूएस रो चिकागो सहर रे से गोटे स्टडी करिथिले वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी कंपनी रे जे ह्यूमन रिलेशन माध्यम रे किभली ऑर्गेनाइजेशन टी डेवलप हुए. सो नोन एज हाथरन स्टडीज, एटा को जाय तांकर हाथरन स्टडीज बोली. These studies research the working conditions. Working conditions is not so important factor. अंक मतरे एल्टन माओ को मतरे जे working condition is not so important to grow and develop the organization. But what is his point of view? So how the organization should focus on what aspects? Se कहले the central conclusion drawn from these studies that was that there was no cause and effect relationship between working condition and productivity. Working condition and productivity there is no 100% relation, but rather human factors and workers' attitude towards company, job and other issues were crucial for enhanced production. अभिमन्यु बुझी पारला थरक एल्टन माओ कौन करछंती कहउछंती. आज्ञा सर. से कहिले जे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सेटा इंपोर्टेंट नो प्रोडक्शन पाई. से कहले रेदर फैक्टर्स ऑफ वर्कर्स एटीट्यूड. गोटा फैक्ट्री रे प्लांट रे वर्कर मानकर एटीट्यूड केभल अछि. सपोज जने टाटा कंपनी रे काम करूछि, टाटा प्लांट रे काम करूछि. सो टाटा कंपनी रो कोन पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स दी वर्कर्स, बा वर्कर माने केते दूर प्रिविलेज सो पाउछंती, सुविधा सुजोग पाउछंती. व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन प्लांट. बुझेला ना नहीं? वर्कर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपोर्टेंट फैक्टर. जदि सब वर्कर माने पॉजिटिव एटीट्यूड जदि ध्यान पॉजिटिव फोकस पॉजिटिव पॉइंट ऊपर जदि फोकस करी थांती, that will create a positive environment within the plant surrounding, and that will have a very good impact on all over the society. समस्ते कहिबे टाटा कंपनी गोटा भलो कंपनी, कारण टाटा कंपनी वर्कर मानको विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग दउची, हाई प्रेस्टीज दउची, हाई रेम्यूनरेशन दउची, and other large numbers of benefit is given by Tata company. So that is the positive attitude towards the Tata company. बुझी पारला थरक. हेलो प्रतिमा मल्लिक, सुनीता महाराज, बुझी पारछ त? बुझी पारछ त? यस सर. अच्छा, ये होची एल्टन माउंकर व्यू बा रिसर्च व्यूटा तांकर. So Hawthorne studies brought out that behavior of workers is inseparable from their sentiments. Such sentiments as in turn are conditioned by an individual
history, socialization, past experience and present situation in the organization. So past experience इत्यादि आगुरु कौन थिला गोटा organization एवं विभिन्न प्रकार organization किभली अछि कौन करूचंती. So everything can reflect to the workers. So administrative and managerial concern must consider organization as a complex social structure and web of human relations rooted in the feelings, emotions, sentiments and individuals. प्रत्येक वर्कर मानकर ऑर्गेनाइजेशनल जो हमर अछि दैट इज वर्कर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द कंपनी किभली वर्कर मानकर एटीट्यूड अछि कंपनी प्रति सेही अनुसार तांकर फीलिंग्स इमोशन सेंटिमेंट्स प्रत्येक वर्कर और इंडिविजुअल मानकर ऑर्गेनाइजेशन प्रति केउ भली एटीट्यूड अछि केउ भली इमोशन अछि. जदि जने कहबो मो कंपनी मते बहुत किछि मते मोर परिवार मोर स्वास्थ्य मोर शिक्षा सबु को गोटे कंपनी जदि जगुची जदि जनकर वर्कर को सो देयर विल बी प्रिवेलेंस ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स टुवर्ड्स द कंपनी ऑटोमेटिकली. सो ये गला एल्टन माउ कर ह्यूमन रिलेशन. ताले एल्टन माउ फोकसेस ऑन प्योरली ऑन ह्यूमन रिलेशन. सो नेक्स्ट होची चेस्टर बर्नार्ड द ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव. चेस्टर बर्नार्ड another researcher focuses on the human relation during 1886 and 1961 भितर से रिसर्च करथिले ह्यूमन रिलेशन ऊपर कोन किभली पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होची. सो आर्ग्यूड चेस्टर बर्नार्ड says that organization functions by maintaining an equilibrium between contribution made by the members and the inducement offered by organization. Contribution कहार contribution ना staff बा worker मानकर contribution for the organization again and inducement offered by organization. Organization ताहले कौन दउची staff मानु. So that is the equilibrium position. Organization जो हिसाब रे ट्रीटमेंट करिवो वर्कर बा मेंबर मानको मेंबर माने बा वर्कर माने मध्ये सेही भली सैक्रिफाइस करिवे. So there will be equilibrium balance position or optimum position. So then the organization will grow and become success. So specific inducement like material benefits such as money and working conditions, personal incentives such as rewards, enhancing power and prestige एगडा सब वर्कर माने एक्सपेक्ट करि थांती आशा करि थांती हला. So these are the Bernard Chester Bernard's view on human relations. So next jiba integrative approach. Focus on integrative approach gota achi that is focuses on process of decision making, organizational psychology, organizational development, open system framework एगडा सब तमे पढिबो ता करे. तापर होची unique requirements for the voluntary organization. Voluntary organization पय हमर सब कोन सब दरकार पड़ी थाए हला. गोटा होची हमर that is the democratic issue of democratic principle में आगुर अनेक थरा में डिस्कशन करचंती गत क्लास रे ता पूर्व क्लास रे democracy issue. Administration and management should have vision, ethos, commitment to maintain internal democracy. So in the voluntary organization, so democratic form of or democratic society. So गत क्लास रे हम आलोचना करथिल democratic society माने प्रत्येक व्यक्तिंकर व्यू को मतामत को सम्मान दिया जाय था. गणतंत्र पद्धति रे each individual views cordially granted or accepted by the organization. So democracy, for example, India is a democracy form of government. So भारतर नागरिक मानकु सम्मान दिया जाय था कोन पई ना नागरिक माने देशर नेता को सिलेक्शन करि थांती. सो देशर आम देशर लोक मानकर मतामत को सरकार बा देश सम्मान दउची by the help of adult franchise साबालक भोट प्रथा द्वारा. तेणु एठी नागरिक माने हेले प्रकृत रे राजा कारण मु जा को पठेबी मो भोट द्वारा से ही सिलेक्ट हबो. बुझि परल से बळे ऑर्गेनाइजेशन ने
प्रत्येक इंडिविजुअल मेंबर मान कथा को गुरुत्व दिए थ्रू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सो नेक्स्ट होची लीगल फ्रेमवर्क अच्छी है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रे तापर डुअल नेचर ऑफ वॉलंटरी एंड पेड वर्कर अछंती एगडा सब पैराग्राफ सब मेन हेड पॉइंट गडा को तापर तमे सेडा को वेरी सिंपल वे रे एनालिसिस करिवो नो प्रॉब्लम एतरे किछि डिफिकल्ट नाही जोडा डिफिकल्ट थिला हम तो बुझे देल से मु तो एक्चुअली पूरा टेक्निक सब पढिया कथा न काउंसिल पार्ट रे बुझ पाइला ना नाही तथापि मु क्लैरिफाई कर दोछि भलो भाबे। सो डिपेंडेंस ऑन डोनर्स सो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रियली डिपेंड्स ऑन दी डोनर्स उपरे बदान्य चेता व्यक्ति समाज थांती देश राज्य विदेशी राष्ट्र मध्य डोनेशन आस्ता है रिलेशनशिप विथ द स्टेट स्टेट सहित वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन संपर्क रहिबा उचित कोडियल शिफ्टिंग ऑफ गोल्स विभिन्न प्रकार गोल लक्ष्य को हमें परिवर्तन करबा उचित एडवोकेसी थिबा दरकार लेजिटिमेसी थिबा दरकार आईनी संगत होइतिबा दरकार प्रत्येक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आईनी संगत रे थिबा दरकार। सो नेक्स्ट होची एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन नो एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस कोन रेस्पॉन्सिबिलिटी कोन अकाउंटेबिलिटी कोन इंडिपेंडेंस मींस द जनरल परसेप्शन among voluntary organization is the state is very more willing to exercise control through funding so that independence will be maintained स्वाधीनता किभली बजाय रह परिबो because that independence depends on the finance factor। So on the extreme point there are voluntary organizations which consider that may any kind of proximity to state financial assistance will ultimately underline their operational freedom। On the extreme there are voluntary organizations which are to a greater extent fully dependent upon the state support granting aid for their existence survival and fees direct payments। so विभिन्न प्रकार फंड्स को हमको कलेक्शन करिया ପାଇଁ पड़िबो प्रत्येक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन so that independence will financially maintain। so next होची responsibility वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रो इंडिपेंडेंस पर responsibility कोन सब अछि ना a balance between external surveillance and issue concerning independence of a voluntary organization। so next a balance between internal discipline and the freedom of members organization नो माने प्रत्येक मेंबर स्वाधीन चेता मतवाद थिबा दरकार एवं श्रृंखला बजाय रखिबा दरकार ए मेकानिज्म फॉर एंटरटेनिंग पॉजिटिवली द inform criticism of beneficiaries check that voluntary organization is doing an ethical right job in the right goals ethical माने एहा राइट गोल ऊपर फोकस करबा उचित। नेक्स्ट discard the old goals जो गुडा के पुराना कालिया लक्ष्य अछि because the society is changing so that voluntary organization गुडी को समाज परिवर्तन अनुसार खाप खुआइला भली तार गोल गुडी को मध्य परिवर्तन करबा उचित एवं पुराना कालिया गोल को सब परिवर्तन करबा उचित। that the voluntary organization is up to date in matters of knowledge skill and emergent requirements knowledge ज्ञान कौशलता दक्षता ऊपर गुरुत्व देबा उचित कॉस्ट इफेक्टिवनेस हबा दरकार एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ सर्विस प्रोवाइड करबा दरकार एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल डुप्लीकेशन टास्क एगडा सब अवॉइड करबा दरकार डुप्लीकेशन अन्य that is wasteful items or goal must be discarded। a mechanism for monitoring and evaluation performance को भली परफॉर्मेंस डेवलप होची ता मध्य फोकस करबा उचित। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी so the image moral standing and the legitimacy of a voluntary organization are intrinsically tied up with the issue related to their accountability समयानुवर्तिता जोटा कहती accountability to duty accountability to time accountability to money विभिन्न प्रकार अकाउंटेबिलिटी गोटे व्यक्ति तार लाइफ रे पजेस करबा दरकार कौन से गडा को
ना अकाउंटेबिलिटी टू ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी टू टाइम। कौन अकाउंटेबिलिटी टू टाइम ना मते जो समय रे मोर ड्यूटी असाइनमेंट अच्छी एग्जैक्ट मु सेही टाइम रे मु पहुंचवा दरकार। ड्यूटी कौन ड्यूटी असाइनमेंट ना मते जहाँ ड्यूटी असाइनमेंट बा दायित्व दिया जायछि ठीक समय रे मु ताको संपादन करबा उचित। सो दैट इज नॉट अ ड्यूटी अकाउंटेबिलिटी। सो मनी अकाउंटेबिलिटी, मनी मीन्स मु जोठू जेतिकी प्राइस क्रेडिट करिथिबी बा लोन आनिथिबी ड्यू टाइम रे आई मस्ट रिफंड इट, so that my accountability will be maintained. Each individual in his life period, he should or she should possesses the three important accountability, so that his life will become successful. Hence, that geographical spread and so on, membership, nature of work, activities, voluntary organization varies. So depending upon the nature, character of a voluntary organization, the issue related to accountability have a different implication for their administration and management. Hence, administration of an incorporated voluntary organization, private is mainly accountable to board of management or to trustee. So प्रत्येक member सभ्य माने board of trustee बा board प्रति तार accountability दरकार, management प्रति accountability थिबा दरकार. So next होची improving voluntary agency administration and management. किभली voluntary agency गुडी को improvement करिबा को पॉइंट रु ना administration and management तरफ. Human resource development and training. किभली voluntary organization by agency गुडी को development हे परिबो if we will focus on the HRD department or human resource development and training ऊपर. कारण सोसाइटी चेंज होची सेही अनुसार वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मानक मध्य परिवर्तन करिबा पई पड़िबो. समाज को खाप खुआइले भली आमे काम प्रशासन एवं मैनेजमेंट परिचालना करिबा उचित. ताहले हमर ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो एंड डेवलप. जदि सेही ट्रेडिशनल मेथड रे करूथिबा सो दैट सोसाइटी विल रिजेक्ट इट. कारण प्रेजेंट इंपोर्टेंस टाको आमे गुरुत्व देबा पई पड़िबो. So that is why the administrator should have the ability to mobilize the creative energy of a team, including volunteers, paid staff, board members, ordinary members, beneficiaries, and others. They should have manifold qualities, inspiring the team and managing the organizational activities, and requisite skill for working with the people in the society. लोकमानक सहित खाप खुआइला भलिया बा समाज सहित खाप खुआइला भलिया हमको काम करिबा पई पड़िबो. So HRD and training needs board, governing bodies, members, volunteers, beneficiaries are also being identified for improving the administration and management of a voluntary organization. प्रत्येक को आइडेंटिफाई करबा दरकार. कौन से ट्रेनिंग दरकार करछि जने मेंबर बा बोर्ड बा मैनेजमेंट कोनटा डेफिशिएंसी रहउछि वर्तमान स्टेज रे से अनुसार आमे से मानको ट्रेनिंग डेवलपमेंट दबा दरकार. देले कोन बा हमर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. So that human resources development training strike a balance between professionalism and self services. अच्छा, reviewing, monitoring, evaluation, information sharing, networking and alliance building एगुडा सब ऊपर मध्य गुरुत्व देबा उचित. So next आमे जिबा the unit 3, third unit, voluntary organization issues and agenda for social transformation. सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ने इश्यू एजेंडा कौन अछि एवं व्हाट इज द रोल ऑफ द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. आज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आर प्लेइंग मेनी सिग्निफिकेंट रोल्स इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी. गोटे गणतांत्रिक समाज रे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बहु प्रकार कार्यक्रम भूमिका थाए. विभिन्न क्षेत्र रे से कार्यक्रम करि थाए. प्रत्येक क्षेत्र रे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन applicability अछि. They are engaged in diverse kinds of activities related to welfare, development and social change. Education, health, पंचायत राज डिपार्टमेंट, watershed project प्रत्येक क्षेत्र रे एवं
HIV एड्स कंट्रोल रे ओसाक्स गोटे अछि ओडिशा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ताको आज शॉर्ट फॉर्म रे ओसाक्स बोली सो आईसीडी आईसीटीसी एवं आईसीडीएस एगुड़ा सब गुड़ाक वॉलंटरी माध्यम रे बहुत काम करा जाय था एमानक माध्यम रे सो various of activities are undertaken by the voluntary organization. So that is why the design and implementation of program in the field of education, health, social welfare and other sectors, especially for the development of underprivileged and marginalized section in the rural society. So that they have long been pioneering innovative approach to meet the needs of rural people or for solving the problems of rural society. And presently they are displaying a renewed interest in process of sustainability, social and economic development, empowerment of weaker and women, and are increasingly involving in issues related to human rights, advocacy, environment protection and other matters. देखो in diverse sector रे voluntary organization गुड़िक काम करिथांती in different sectors बहु प्रकार सेक्टर रे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सब काम करिथांती आजिका वर्तमान समाज रे बा देश मानक हिस्टोरिकल जेनेसिस एंड रूट्स ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सब हिस्टोरिकल जेनेसिस अछि the nature of diversity among voluntary organization while simultaneously underlining their common and shared mission to improve human conditions in society प्रत्येक पुराना हिस्ट्री के जदि हमें फोकस करिबा हिस्ट्री का को जाय ना द रेकॉर्ड ऑफ पास्ट पुराना काल कथा को हमें इतिहास बोली कहि थाउ हां तेनु करी पूर्व काल रे कोन थिला एबे कोन करिबा पय हमकु पड़िबो कोन परिवर्तन करिबा पय पड़िबो आज पर दी चेंजिंग हैबिट ऑफ दी सोसाइटी समाजर परिवर्तन अनुसार सरकारंकर परिवर्तन अनुसार लोकंकर एटीट्यूड परिवर्तन अनुसार हमकु कोन करिया पय पड़िबो सोशल ऑर्गेनाइजेशन सेहि भली परिवर्तन करिबा पय पड़िबो डाइवर्सिटी अमंग voluntary organization रे कोन there has been occurred an enormous growth of voluntary organization in India particularly since independence भारत स्वाधीनता हवा परे परे सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक संगठन गुड़िक बहु परिमाण रे गढ़ी उठिचंती सो देश राज्य विदेश एवं व्यक्तिगत कंपनी समस्त समाज सेवा को गुरुत्व देथांती एवं प्रत्येक क्षेत्र ग्रांटिनेड बा हमर विभिन्न प्रकार ग्रांट सब दिया जाय थाए ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन these voluntary organizations pursuing welfare and development activities are spread out in various parts of the country. They substantially differ in terms, structure, characteristics, location, approach and purpose. जो अंचल रे जो प्रकार समस्या देखा जाउची परिवेश परिवेष्टन देखा जाउची सेही अंचल रे सेही भली सोशल ऑर्गेनाइजेशन सब गढ़ी उठिची सेही भली कार्यक्रम करूची कोठी एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हलानी सेठी सेही भली सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम करितांती हाउ टू प्रोटेक्ट दी एनवायरनमेंट को अंचल रे हमर परिवेश वाटर दैट इज वाटर एयर पॉल्यूशन हलानी एवं अर्थ सरफेस मध्ये पॉल्यूशन हलानी बा अन्य क्षेत्र मान करे पॉल्यूशन हलानी कोठी डिफॉरेस्टेशन घटिलानी जंगल क्षय घटिलानी से अंचल रे जंगल केवल सुरक्षा देबा सोशल ऑर्गेनाइजेशन रे काम करा जाय थाए आदिवासी बहुल लोक मान को विभिन्न प्रकार चारा सब मध्ये सप्लाई करा जाय थाए बाय द हेल्प ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ए लार्ज नंबर ऑफ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन आर स्मॉल इन साइज लार्ज इन साइज बहुत प्रकार ऑर्गेनाइजेशन सब सृष्टि हलानी a sizable number of voluntary organizations are engaged in welfare activities and implementation of development programs in rural areas. A great many among them are busy in replication and expansion of government experience, while a few are also developing and devoting attention to innovation, experimentation, demonstration of a new approach to development. So that is why there are also voluntary organizations having इंटरनेशनल प्रेजेंस भारत रे अनेक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अछि अंतर्राष्ट्रीय स्तर रे मध्य रिप्रेजेंट करि थांती इंटरनेशनल लेवल ले फॉरेन कंट्री यदि हम देशर लोक माने रिप्रेजेंट करिवे प्रचुर परिमाण रे माने डोनेशन आसीबो ग्रांट आसीबो विदेश रु
आम देश रे प्राय जेते कार्यक्रम प्राय सब फॉरेन एड रे सब चली है। अच्छा, so that is why as based in foreign countries most of the voluntary organization receives grant in aid or funds from state or private sector and work in close collaboration with the government and business houses। बहुत प्रकार विभिन्न प्रकार कंपनी मानक थरु मध्य ग्रांट आस्थाय सरकार सहित टाटा कंपनी जेभली हमको बहुत माने ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन संगठन करिछि। टाटा कंपनी ग्रांट दे विभिन्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन को सरकार ताको इंटरफेयर करि थांती को काम रे सेही फंड्स गुडी को यूटिलाइज हे परिबो ए सबु सोशल ऑर्गेनाइजेशन मध्य रे करा जाय थाय। Several volunteer organizations are varying with each other for having different aim and objective। So historical genesis of voluntary organization is that evolution of activities of voluntary organization has subsequently been influenced by the rise of democracy and welfare pluralism। The transformation of these activities has taken place because of the urge and efforts of a voluntary organization to develop alternative to the development prospect of modern state। NGO in developed and developing countries, including in India, helps and cooperate in health sector and education sector for the environmental protection and land or soil degradation or air water pollution, how to protect it and provide one cordial environment, protect the environment। So Gandhian philosophy, for example, Gandhian philosophy कौन थिला? सोशल ऑर्गेनाइजेशन कौन करि थांती टू डेवलप दी गांधी मुख्य मतामत होची गार विकास टू डेवलप दी विलेजेस बिकॉज इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस वेयर मोर देन 80% पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड लिविंग इन रूरल एरियाज। सो गार विकास करिवा सामाजिक सेवा संगठन माध्यम रे गार स्वास्थ्य शिक्षा कृषि ये सब को आमे विकास कले सामाजिक संगठन बा सोशल ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रे ताले अनेक अंश रे सरकार जो गुडी को काम करि पारंती नाही आमे जदि सोशल ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रे से गुडी को डेवलप करिबा ताले देश आगे चलियो इकोनॉमिकली सोशली पॉलिटिकली इन एवरी sphere the country will develop। So care and welfare principle, care and welfare principle is applied by Mahatma Gandhi। So change and development तापरे एक्शन इंडिया वुमेन प्रोग्राम विभिन्न प्रकार एक्शन इंडिया वुमेन प्रोग्राम बहु प्रकार वुमेन महिला मानकर पई सरकार कार्यक्रम सब हाथ को नहीं थांती पिला मानक पई चाइल्ड वेलफेयर पई। So Action India was formed during 1974, Action India for women development। So that is why by a group of middle class women and men who played the role of facilitators, bringing poor women together to form a small group in a neighborhood। So कौन होतला से समय during 1974 रे women program रे Action in India women program रे केते गुडी महिला जो माने संगठित करिथिले संगठित होई जो दोज women are deprived categories, these women focused on them and developed their economic and financial status। So such a group was called as was formed to produce and market products without having to go through मिडिलमैन ब्रोकर बिना यही महिला मानकू स्वावलंबनशीलता हासिल करिबा पई से मानक सब विभिन्न प्रकार प्रोत्साहन देले महिला सशक्तिकरण माध्यम रे स्वावलंबनशीलता हासिल करिबा पई एवं इंडिपेंडेंटली रोजगार क्षम करिबा पई ए महिला संगठन से मानक सब सहायता कले। सो कम्युनिटी हेल्थ केयर 1984 रे महिला मानक पई कम्युनिटी हेल्थ केयर और वर्कर प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड बाय रिक्रूटिंग ट्रेनिंग वुमेन फ्रॉम दी बस्तीज स्लम एरिया रो सब महिला मानक डका गला जो माने दारिद्र्य सीमा रेखा तले थांती से मानक हेल्थ वर्कर भाव रे काम रे सब नियुक्ति करा गला। सो ए बडी सब एक्शन इंडिया
वुमेन प्रोग्राम अनेक महिला संगठन मध्य नहीं थांती। सो नेक्स्ट होची इंडियन स्टेट एंड रूरल डेवलपमेंट एंड इंडियन स्टेट diversification of issues and voluntary activities. So the diversity of activities of voluntary organization increased with the rise of democracy. Democracy rise বা development হওয়া পরে পরে আমার voluntary organization মধ্যে expand করেছে ଆମ ଦେଶରେ। relationship voluntary organization and the states କଣ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ voluntary organization ସହିତ ଆମ state ର। So initially voluntary organization used to carry out such care and welfare activities working with poor, destitute and physically challenged or handicapped persons as were often ignored by the state. ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ପାରିନଥାଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଭଳି କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକ, ନିଃସହାୟ ଲୋକ, ପାଗଳା ଲୋକ ଏବଂ ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିଃସହାୟ, ନିରାଶ, ହତାଶ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବା ରନିଂ ଇନ୍ ଗ୍ରିଫ୍, ଡେସ୍ପେୟାର ଆଣ୍ଡ ପେନ୍, ନୈରାଶ୍ୟ, ହତାଶ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ପଚି ସଢ଼ିଲା ଭଳି ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହାତକୁ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପିଲାମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ପାଠରେ ଆମକୁ ଏହା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୀ ଏବଂ ପାଗଳା ଲୋକମାନେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସହର ବଜାର ମାନଙ୍କରେ। ତମେ ଦେଖୁଥିବ ସବୁ ବଜାର ଘାଟ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ। ତେଣୁକରି ଏଟା ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଆମ ଦେଶରେ। am I right? Yes, sir. Right, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସହର ବଜାର ଦେଖ କିଏ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଥିବ। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବଡ ବଡ ରାଉରକେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବଡ ବଡ ଆମ ଓଡିଶା କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ନିଃସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଶୀତ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଃସହାୟ ଭାବରେ ହତାଶ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆମର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅନେକ ରୋଲ ଅଛି। ସରକାର ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାଠ ଆମକୁ କହୁଛି ଆମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏଇଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଠିକ ନା ନାଇଁ। ହେନ୍ସ state and voluntary organization developed a close relationship based on consensus and contract. Voluntary organization realized the necessity to work as partners in the delivery of services in the society. पार्टनर भलिया काम करवा दरकार कि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन आउ स्टेट सबु खाली कागज पत्र चली ना कि लर्नर्स प्रैक्टिकल किसी के पारू ना। Yes, sir. राइट अभिमन्यु, राइट राइट। सो इंडियन स्टेट एंड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कौन ए नॉन प्रॉफिट लीगल एंटिटी बेस्ड ऑन वर्किंग इन ए रूरल एरिया फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years, flexibility, having professional competence and skill to implement programs, so open to all citizens in India, committed to secular and democratic rules। एगुड़ा सब नीति नियम सब अच्छी। इंडियन स्टेट एंड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एई भली सब काम उभय परस्पर जड़ित होई कि काम करबा उचित। वॉलंटियर सेक्टर डिजर्व्स एनकरेजमेंट बिकॉज इट हैज कंपैरेटिव एडवांटेजेस। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन गुडी को एनकरेजमेंट दिया जाय था बा मोटिवेशन पावर दिया जाय था बिकॉज मच क्लोजर टू द पुअर एंड डिसएडवांटेजेस सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। कारण वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन माने गरीब श्रेणी, दुस्थ, डेस्टिट्यूट, निःसहाय लोक मानक जो माने निराश हताश रे जंत्रणा रे गति करू से मानक पाखा पाखी था के वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। दोज पीपल रनिंग इन ग्रीफ, despair and pain, जो माने नैराश्य, हताश, जंत्रणा रे गति करूचंती
सेमानक पाखे पाखे थांती वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन किंतु प्रैक्टिकली मोर कहीं विश्वास जाऊ ना जेहेतु आमको पाठ कहूँ आमको पढ़ा ही पड़ो ना कौन अभिमन्यु श्योर हेलो सर हाँ सर श्योर सर पढ़ा पड़ो परीक्षा खातार लिखा पड़ो यस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भल यही सब कम कर बुझिपार सर कौन गोटे एक्शन नहीं होनी सर कौन आ से कथा आलोचना कर ना बुझल दैट विल डिस्कस लेटर श्योर सर श्योर so more effective in bringing people participation having greater potential for innovation prefer to work in a multi sectoral framework एई भली सब काम करबा उचित वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन करबा हमको जहा कुआ जाउछ हम सेया करबा पड़िबो आ प्रैक्टिकली जहा हो बा न हो सो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट होची एस्पेक्ट गुडी कहूची वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड रूरल डेवलपमेंट so that here rural social context structural location of voluntary organization a crucial role played by voluntary organization is related to community development programs are of vital significance for the building of community and the individual in the state sense that an individual acquires the potential to further contribute to the development of the village and the community hence the voluntary organization strives to create a shared vision among various sectors in the process of development. Since members of a voluntary organization or non-government organization are apolitical, they are able to ensure systematic participation of a community by simply focusing on the common cause involved in the process of development. A voluntary organization resolves internal contradiction by giving priority to the development of the community. It ultimately empowers and marginalized community. This gave rise to new opportunity for voluntary organization and non-government organization and strategy for sustainable development. Hence, किभली sustainable development है परिबो वर्तमान चली परिबो एवं भविष्यत पीढ़ी पर्यंत हमर नेक्स्ट जनरेशन पर्यंत voluntary organization तार प्लानिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करि परिबो फॉर ए लॉन्ग टर्म पर्पसेस द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन द पॉइंट फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पसेस सो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन नेचर of current activities and issue related to rural development. So contemporary voluntary organizations including NGO are playing a crucial role in the process of change and development. While also performing simultaneously their traditional functions, care and welfare. Traditional जोड़ा का महात्मा गांधी का प्रिंसिपल थिला care and welfare of the society, village and people. जत्ननीय एवं सेमानकर मंगल कार्य हातकु निय particularly in rural areas. Their current activities and issues addressed by them pertain to diverse range of fields: literacy, education, health care, skill training, employment, housing, sanitation, empowerment of weaker section, women care, environmental protection and advocacy. वर्तमान current stage रे current गवर्नमेंट करंट सोसाइटी रे हमें एई गुडी को सब काम को हाथ को नोचन जेमते डीडी यू जोटा अछि दीनदयाल सोशल ऑर्गेनाइजेशन गोटा अछि जानछ डीडीयू जेक्यू से जोटा अछि दीनदयाल सोशल ऑर्गेनाइजेशन गोटा अछि पिला मान को स्किल आत्मनिर्भरशील होवा पई स्किल ट्रेनिंग सब दिया जाउछि देखु तो सब विभिन्न शहर मानकर अछि सो एथिरे अछि literacy voluntary organization nature current activities रे कोन होची related to rural development current voluntary organization कोन करछि सब हाथ को नोची ना literacy training दिया जाउची education health care skill training employment cooperative self help group SSG group empowerment of weaker section empowerment of women environmental protection housing and sanitation ये सब मध्य काम करा जाउची हमर voluntary organization माध्यम रे Next is a voluntary organization prospective issue and agenda for a rural social transformation. कौन सो prospective views अछि? Agenda कौन अछि for rural transformation?
आंचलिक ग्रामांचल ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन सब कौन करिथाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यू ऑफ रूरल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट होची इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पंचायत राज सिस्टम प्रत्येक जिला गोटे लेखा पंचायत राज सिस्टम अच्छी ब्लॉक माध्यम पंचायत राज द्वारा बहुत प्रकार सैंक्शन दि जाए कुकुड़ा फार्म करवा छेली गोटेरी बा फिशेरी गोटेरी डकेरी कुकुड़ा फार्म करवा छेली पालन करवा बतक चाष करवा मत्स्य चाष करवा ये सब पंचायत राज सिस्टम रु सब ट्रेनिंग फ्री रे मागणा रे बैंक माध्यम रे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ताको स्पॉन्सर करथाय हला नेक्स्ट होची ट्राइबल सेल्फ रूल सब एगडा सब रिहैबिलिटेशन स्कीम सब हाथ को नहीं थाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्शन थ्रू कोर्ट mediators between people and other agency access to assets and resources human rights building civil society एगडा सब विभिन्न प्रकार सब कार्यक्रम हाथ को निया जाय थाय का माध्यम रे ना सोशल ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रे आमे जा देखुचंती ए गुडी को सब प्रैक्टिकल केते दूर एप्लीकेबल केते कोन संभव होई परिबो देश रे सोशल ऑर्गेनाइजेशन बा डेवलपमेंट ग्रोथ democratic principle madhyamare that depends on the accountability nature attitude of the members of the social organization the sacrifice and the dedication depends on the each member of the social organization प्रत्येक मेंबर को ऊपर निर्भर करि थाए हमें देखुचंती प्रैक्टिकली वाटर सेट प्रोजेक्ट पंचायत राज डिपार्टमेंट माध्यम रे बैंक माध्यम रे लीड बैंक स्कीम जोटा अछि हमर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे गोटे लेखा लीड बैंक अछि व्हाट डन बाय लीड बैंक सोशल ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रे कोन करछि स्पॉन्सर करछि ट्रेनिंग फैसिलिटी एटसेट्रा सो लीड बैंक होछि जो जिल्ला रे अधिका फाइनेंस करूथिबो अधिका ब्रांच थिबो हला अधिका ब्रांच थिबो शहर रु ग्रामांचल पर्यंत अनेक ब्रांच थाए से ब्रांच गुडी को कौन करिवो विभिन्न प्रकार फैसिलिटी सब पंचायत राज डिपार्टमेंट माध्यम रे आत्मनिर्भरशील करबा पई सेल्फ रिलायंस हवा पई विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करिथाय कोन अलाइड एक्टिविटीज अलाइड कल्टीवेशन सहायक चाष जोडा हमर अछि कारण वी नो जोडा रेगुलर कल्टीवेशन करा जाउची इट द मॉनसून नो गैम्बल मौसम बायर जुआ खेल क्रीडनक भाबरे चाषी जदि चाष कला जदि फसल भल मौसम प्रभावित हला ताहले प्रचुर फसल हबो जदि चाषी अनेक माने कोन बिहन पकेला सारा विश्व कीटनाशक चाष जमी रे पकेई आसिला किंतु मौसम हला नाही सो जुआ खेला हे गला दैट इज गैम्बल ऑफ मॉनसून फॉर द फार्मर सो चाषी मुंडरे हाथ देई बसिला चाषी अपमृत्यु देखा गला चाषी आत्महत्या देखा जाउची सो एठी कोन करा जाउची अलाइड एक्टिविटी को सोशल ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रे जोगे दिया वर्ष तमाम द फैमिली मेंबर्स विल अर्न चाषी मानकर परिवार वर्ष तमाम कि भଳି आय करि परिबे कोटा सेटा होची अलाइड कल्टीवेशन जोटा कहा जाए अलाइड फार्मिंग सिस्टम अलाइड फार्मिंग माने मुख्य चाष को जे सहायक करिथाय किए से ना गो पालन करिबा मत्स्य चाष करिबा एवं कुकुड़ा चाष करिबा तापरे छेली पालन करिबा बतक पालन करिबा मौमाछी चाष करिबा हला एही बड़ी सब अलाइड एक्टिविटी कारण आम गो पालन जदि करिबा वर्ष तमाम आम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मिल्क क्षीर पाइबा सहित क्षीर जात विभिन्न प्रकार छेना दही घी एवं अन्यान्य सब द्रव्य आइटम गुड़िक खाद्य आइटम गुड़िक हम पाई परिबा so वर्ष तमाम all the members of the family will engage and to earn their per capita income will increase and if the family income will grow that will have a very good impact on to hike the national income समग्र देशर जातीय आय मध्य वृद्धि पाइबो hello learners I completed today I marked a full stop in my counseling today. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.
थैंक यू आगे लर्नर्स माने आगे पहुंचबो संगे संगे आगे तुम रजिस्ट्रेशन कर दबो मन रहिला आज्ञा सर मु डेली कहूची ये रजिस्ट्रेशन करिया पे डेली कहूची अदर नेक्स्ट खाली जो करिया पे न पड़िबो ओके सर आगे पहुंचबो तो रोल नंबर एंड नाटा को रजिस्ट्रेशन कर दबो कारण मते ऊपर इंस्ट्रक्शन अछि हमर कोऑर्डिनेटर सर बारंबार एक कथा कहिसंती डॉक्टर दामोदर साहू हमर इग्नो कोऑर्डिनेटर अछंती ही इज सो एफिशिएंट से माने बहुत माने दक्षता having efficiency and knowledge on this coordinating part and providing sufficient instruction to us all the counselor are instructed by him how the learners will cordially attend the examination paper they should maintain some of the guidelines and principles follow some of the guidelines and principles how to write cordially and present the answer cordially in his answer script. So I marked a full stop here today in my counseling. रखिली ताले ओके सर